your final authority for sanctioning the benefits to eligible persons in some government scheme for welfare of the weaker section. The person has applied for the benefits and the file has reached you. ये भी actually हुआ था. One of my friends, it happened. Not IAS person, some other level. A person has applied for the benefit and the file has reached you through the proper bureaucratic channel. You gave the final sanction after going through the file forwarded by your junior staff. The money is accordingly released to the claimant's account. यहाँ तक कुछ issue है? सुना या नहीं सुना ही नहीं? सुना? ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है. However, later on you notice that the applicant had not fulfilled the eligibility criteria for the scheme properly. The scheme was actually mandated for the people who from the SC community along with the additional conditions. You, on the other hand, discovered that the claimant was not from the requisite community. मतलब क्या हुआ था? उसके पास वो SC सर्टिफिकेट था नहीं, but he got the benefit. Some error from on whose part? इसलिए तो ध्यान दो बोल रहा था. Junior staff. The application filed by him had a proof of claiming that he was actually from ST community. समझ में आया? ST community. यही तो ध्यान दो इसलिए बोल. And ये exactly हुआ है ऐसे ना. And the person thought that okay इसके पास ST certificate है, but the certificate required was SC certificate. तो यहाँ तक तो कोई issue नहीं है कि एक human error हो गए. But as I said, the issue is of honest mistake. There is no malafide intention. You know this. Now, next issue और है. Upon realizing the mistake, you thoroughly investigated the matter and realized that it was an oversight on part of your junior staff, ठीक? As well as the verifier, junior staff ultimately. You also came to know that the entire application is fake, not wrong, fake, and the claimant is neither from SC community nor from ST community. तो ST community का भी फेक बना के लेके आया था वो. और ये सच में हुआ है. आप बोलेंगे ऐसे कैसे कर दिया? ऐसे ऐसे एग्जैक्टली होता है. He thought the scheme is for ST, तो उसने ST का बना दिया फेक वाला. Money has already been disbursed to his account and it was already withdrawn by the beneficiary in this situation. And this is exactly, as I said, this is exactly happened. What options do you have? Who are you? Final authority for sanctioning. What options do you have? Right along with their merits and demerits. Okay, write a course of action that you will follow. क्या options है? Yes, good. ऐसे कैसे? No. You can see if you can prove. See, in government, anything is possible if you have proof. You know, even so-called, even the properties has been already done on somebody else's name. When it comes to court, they will decide. They will, check everything, and they can redo everything if it is illegitimate, illegal. Yes. 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 Why it can? I will first of all put you in jail for putting fake this thing. See, if you put, was your certificate true? This you are doing some modifications to this case. I am saying, what are these modifications? Even then, ban can freeze you. This happens, no? This happened. SBI, there was a news, some UP fellow suddenly got some 1 crore or 10-50 lakh rupees there in their account. Suddenly, he also doesn't know कि ये क्या है. But immediately they realized, they immediately freeze the
अकाउंट, हाँ यस यस, वो तो ऑब्वियसली कर सकते। And by the way, if you like by mistake I transfer to your Paytm instead of him, but if you can contact the bank or within like 1 hour, 2 hour, whatever, I can take money back from you. You're like, why should I give? I am not. You cannot say that. You have to prove in the this thing that yes, I was buying from you this. I have to prove that no, I was supposed to send it to him. ये ऐसा फेट अकम्पली नहीं होता कि भेज दिया पे कुछ नहीं कर सकते, वो बंदूक की गोली थोड़ी है। System, see, that's the thing. If you really want to do things, no, system can be twisted in any way, for positive or negative. So in that case here, yes, your effort should be to the extent possible retrieve the money, get back the money to the extent possible. Now it depends. But now you have one more advantageous point that he was fake. SC ST हमारा mistake छोड़ो, हम देख लेंगे internal matter. That you know the scheme itself was not for ST, but still money was released to him. But the problem is he himself submitted fake documents, so he is a criminal like that. ठीक है, तो पैसे उससे वापस लेना है, पॉसिबली उस पर केस करना है. What would you do to subordinate? इंटरनल इंक्वायरी तो कर ही सकते हैं, बट realizing the mistake, thoroughly investigated था कि it was oversight on part of, हो जाता है, होना आना ही चाहिए. There has to be some punishment, smaller one, some systemic change here possible. So you have to bring in some change here, systemic change, that वो बाद में फिर कोई और, yes, some checking, some digital system which can confirm that any mistake of this sort doesn't happen. Yes, yes. No, but the point is now, yes, at least something can be done, like because this document is not made by your department. The caste certificate is given by some other department, so that is their headache to make it hologram and things and that, Aadhaar connected and all. That is their job. But recommendation can be given. Sir, हमारे पास ऐसे fake document आ रहे हैं, देख लो जरा. वो तो उस department, the one department responsible for giving the caste certificate should be informed by you for sure. कि देख लो ऐसे ऐसे आ रहे केस. But no, here that document itself was fake. The only thing is it could not be, we did not doubt it in initially. So document fake was very clear, it was fake. Fake document तो ऐसे ही पता चल जाता है ना, no need to have system for that. Because fake तो fake ही है, it's just that it was an oversight. Fake तो fake ही है. वैसे तो fake currency लेके अगर कोई आपके पास आ गया तो क्या कर लोगे, वो तो देख के fake ही है, समझ में आ जाता है, या फिर आपको जो भी system हो. That is okay if the problem becomes very big, like so many fake caste certificates are coming up, then you need to do something, and especially from these 5 villages only it is coming. Why? Then it becomes a different issue. Otherwise एक single issue के लिए नहीं कर सकते. Yes, yeah, then you, I am final authority, वो सब ठीक है, money released ये सब है. Not to proceed with the case further, कि भाई चलो छोड़ो, कुछ कर नहीं सकते. ऑप्शंस क्या है जो आपने बोला हम क्या कर सकते हैं, गए पैसे गए, पनिश करो इसको. दूसरा, राइट अवे सस्पेंड द इन्वॉल्व जूनियर स्टाफ, जो भी बंदा है उसको राइट अवे सस्पेंड कर लो. एक्सप्लोर द मल्टीपल वेज लीगल बिहेवियरल टू रिट्रीव द मनी एंड करस्पॉन्डिंग लॉन्ग टर्म मेजर्स टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ सच मिशअप. सो बेसिकली ये हुआ क्यों है, उसने फेक किया, ये एक चीज. सिस्टमिक चेंज क्या होना चाहिए, इफ इट वाज फेक आल्सो वी शुड बी एबल टू नो दैट इट इज फेक एट द फर्स्ट इंस्टेंस. SC ST वाला मिस्टेक तो छोड़ ही दो, वो तो छोटा मिस्टेक है, बट जो फेक वाला है उसके लिए हम सिस्टम इन प्लेस रखना है. तो ऑब्वियसली कुछ नहीं करना ऑप्शन तो रहेगा नहीं, ठीक है. तो बेसिकली हमारे पास ऑप्शन है कि जो बंदा है उसको आप क्या कर लो,
पनिश करोगे नहीं करोगे। कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, कंसल्ट विद लीगल टीम, पुलिस कंप्लेंट, वो सब। कोर्स ऑफ एक्शन में फिर डिटेल आएगा कि यू नो व्हाट वुड यू डू विद दिस पर्सन आल्सो, पुलिस एक्शन, पुलिस तो होना ही है, फेक डॉक्यूमेंट है तो देयर इज अ क्रिमिनल एक्शन देयर। ब्लॉकिंग द बेनिफिट फ्रॉम एनी फ्यूचर स्कीम, ये भी तो कर सकते हैं, ब्लैक लिस्ट कर दो इसको। फॉर एनी एलिजिबल स्कीम के लिए भी उसको बोल सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं आप, इफ यू आर फाइनल अथॉरिटी यू कैन डू इट। प्रैग्मेटिज्म, ऑब्जेक्टिव, इंट्रा डिपार्टमेंट इंक्वायरी, जो आपने बोला कि उस डिपार्टमेंट को बताओ कि भाई क्या चल रहा है, देखना, वो तो करना ही पड़ेगा। इफ समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज कमिंग, जस्ट इन्फॉर्म दिस केस हैज हैपेंड, दैट इज आल्सो आवर रिस्पांसिबिलिटी। इंप्रूव द वर्क कल्चर, कॉल द फेक बेनिफिशियरी, परसुएड हिम ऑन द मॉरल एंड इलीगल ग्राउंड्स टू रिटर्न द मनी, ऐसे ही किया गया। आप बोलेंगे ये क्या मतलब है, फोन पे उसको कन्विंस किया गया, नहीं, परसुएड करने से वो पैसे दे दिया, मेरे पास उतने नहीं है अभी, उसने बोला, एक्चुअल में बता रहा हूँ मैंने तो खर्च कर दिया, तो उसको बोला गया कि ठीक है पहले इंस्टॉलमेंट में इतना दे दो, वो रिटर्न आ गया, फिर दूसरे में ऐसे करते करते उसने पूरा दे दिया। तो द पॉइंट इज, उसको पता चला, नहीं तो ग्राउंड पे ये था कि नहीं करोगे तो फिर एक्शन पुलिस की होगी आपके ऊपर, खत्म कर दो इशू को, नहीं तो वो तो वैसे भी ही वाज नॉट वेरी रिच पर्सन, नो, तो ऐसे ही मैनेज करने वाला था, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। यही तो दिक्कत है, प्रैक्टिकली ना बहुत काम मॉरल ग्राउंड पे हो जाती है, क्या कर रहे हो तुम लोग, नॉट जस्ट मॉरल, ऑब्वियस लीगल एंड मॉरल दोनों दोनों काम करते हैं। See, don't remain very hard when it come to case study, right? What exactly you're going to do? ऐसा तो नहीं होगा कि पैसे दे रहे हो इसको जेल में डालो, ऐसे नहीं होता, उसको बिठाएंगे, वो इसकी सिचुएशन देखेंगे, because somebody who is doing so many things means इसके पास पैसा है ही नहीं, as such। हाँ, वो भी होगा, will help, yes yes, it works, उसको भी लगता है कि हाँ, because it's human being, no, it's not, they are not machines। अभी मेरा जेल में डालेंगे तो, और आने के बाद इतना अच्छा बात कर रहे हैं तो हाथ से ही काम चलेगा। एंड पॉइंट इज वन ऑफ द ऑप्शंस दैट यू, बिकॉज मॉरल एथिक्स के पेपर में तो लिखना ही पड़ेगा ना कि थोड़ा मॉरल आर्गुमेंट भी देंगे उसको कि आप गलत कर रहे हो, सम बेनिफिशियरी सही बेनिफिशियरी को नहीं जा रहा, and ऐसे होता है, यू विल बी लाइक, आप हंसोगे लेकिन ग्राउंड पे जिन लोगों के साथ यू विल बी डीलिंग विद, गांव के लोग एंड ऑल, दे विल बी लाइक, उससे भी थोड़ा हिल जाते हैं वो, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा तो हिल जाएंगे, देन लेटर थिंक दैट यू विल बी से दैट देखो, if you don't do this then we have to take action, we are not angry on you but action, तो वही retributive punishment वाला जो है कि भाई एक्शन लेना पड़ेगा because you have done this, like that। with finance team contact concerned bank, उसको अकाउंट फ्रीज करो, अकाउंट ही फ्रीज करो उसको, your government body, bank will follow, has to follow। पुलिस बोल दे तो पुलिस की एफआईआर दिखा दो बैंक को, डिपार्टमेंट का कॉर्ड दिखा दो, बैंक तुरंत फ्रीज कर देगा अकाउंट। बैंक प्राइवेट है तो भी करना पड़ेगा, you need to understand, you as for the government, as far as the government body is concerned, you have a lot of power। if एक पुलिस भी फोन करे, एफआईआर की कॉपी और सब भेज दें, you know how the money was released to him, this scheme blah blah blah, this is the FIR copy, ठीक है, immediately वो you know he is क्या बोलते हैं उसको, he is ordered to freeze the account। वो ऐसा नहीं बोल सकता कि वो हमारा कस्टमर है हम उसका अकाउंट कैसे फ्रीज करेंगे, एक तो उसके अकाउंट में पैसे गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब कुछ वो बैंक और गवर्नमेंट का जो भी है उसमें कुछ तो टाइप होगा, तो उसको आराम से कर सकते, वो ना नहीं बोल सकते।